Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cognitive Coders. So today in this PySpark video series we'll learn how to use UDF. So UDF, what is UDF? Yeah, that user defined function, what is this and how to use it, that thing we'll get to learn in this video. Okay, so suppose think first we'll try to understand why we use UDF. Okay, suppose think you are performing one operation, one data engineering activity. Okay, Spark activity that is in that activity you need to use some logic uh, that you will use multiple times. So yeah, in that case you need to write that logic multiple times. Okay, but why we'll write it multiple times if we can define it in a function, Python function. Okay, so for that reason, we can define the logic in a Python function, and then we can use it in our data frame multiple times. Okay, multiple times activity. So for using the Python function in our data frame uh, for multiple times in our multiple activities, we need to register it using UDF. Okay, so basically मल्टीपल टाइम कोई पाइथन फंक्शन जो यूजर डिफाइंड पाइथन फंक्शन है उसको मल्टीपल टाइम पार्ट में यूज करने के लिए पाइथन में यूज करने के लिए उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन से डिफाइन कर रजिस्टर करना पड़ता है ठीक है तो विल डू द हैंड्स ऑन एंड इट विल बी मोर क्लियर तो कमिंग टू दिस coming to our notebook I have already created one data frame okay तो अभी हम लोग पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फिर मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है ऑलरेडी एंड यू कैन सी हाउ यूजिंग द हेल्प फंक्शन हाउ यूडीएफ यू कैन यूज so I'll show you in hands on okay you need to you need to define the function okay so using the user defined function in PySpark okay so I'll show you in hands on and please watch whenever you are doing them use this help function and watch the documentation before using this video. Okay. So, so suppose think I need to I need to add one column here where I will get the total marks of math and physics. Okay. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो पहले हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे ठीक है तो उससे पहले कर लेते हैं तो एक पाइथन फंक्शन डिफाइन करेंगे वेयर सम ऑफ सब्जेक्ट तो उसका नाम देते हैं सम ऑफ सब्जेक्ट तो यहाँ पे कितना आर्गुमेंट पास होगा दो आर्गुमेंट पास होगा एक मैथ्स के लिए एक बंगाली के लिए दो वेरिएबल लेते हैं ठीक है आई विल टेक टू वेरिएबल्स एंड आफ्टर दैट रिटर्न क्या करेंगे रिटर्न करेंगे इन दोनों का सम ठीक है तो ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया ठीक है so now I need to register this user defined function in PySpark okay otherwise we can't use it multiple time in our Spark activities is data frame creation or any kind of operation we can't use multiple time okay so for registering it what you need to do first you need to give one name of this UDF function okay so suppose I'm giving it uh, the same name I can give sum of okay, subjects okay subjects again okay so
now use the UDF. Call the UDF and as the argument pass lambda function. Then we need to pass these two arguments. Okay, so I've taken the variable of the lambda function. So now just write our function sum of subject. Okay, now just pass the lambda variable. Okay, now after giving the comma, you need to define the return type of this function. So my function return type will be an integer. So first import the integer from PySpark dot SQL dot types. Okay, import integer. Okay. So just mention it like the function. Okay. So now the function has been registered. Here when I'll run this cell, the function will be registered in the PySpark. Now I can use it in my Spark activity. So if I want to use column, I am adding once total marks. Total marks where I call this function. You can see intelligence is giving me function. So after that, just 1 minute, I need to pass the column. So what will be the column? Here dot math and df dot sit. Okay. Now we can call the show. So just run it. We have one column total. This marks the sum of this. So basically जो भी एक्सप्लिसिटली फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो पाइथन फंक्शन को पाइथवर्क में यूज करने के लिए पाइथवर्क में रजिस्टर करना पड़ेगा. दिस इज द मेन फंड. फॉर रजिस्टरिंग इट यू नीड टू गिव वन फंक्शन नेम हियर. तो फंक्शन नेम देने के बाद उसको यूडीएफ में बस डिफाइन कर दो. तो लैम्डा फंक्शन यूज करो, उसका वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे लैम्डा का वेरिएबल दो और उसके बाद अपने फंक्शन को लिखो, उसके आर्गुमेंट में वो लैम्डा का वेरिएबल पास करवा दो. सो दैट व्हेनेवर this function will be called, this argument will pass to this and the function will return its value. Okay, तो उसके बाद बस कॉमा देके यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप दे दो. अगर तुम हेल्प फंक्शन से यूडीएफ को देखते हो पहले बिफोर डूइंग दैट, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये इसका सिंटैक्स. ओके, फिर भी मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है. ठीक है, तो अभी ये तो पाइस्पार्क में देख लिया. अभी हम लास्ट डे ऑलरेडी इन माय लास्ट वीडियो वी हैव सीन द global template view and normal temporary, sorry, the
ग्लोबल टेम्प व्यू एंड टेम्प नॉर्मल टेम्प व्यू। तो टेम्प व्यू क्रिएट करके हम लोग सीक्वल यूज कर सकते हैं। सीक्वल से हम लोग क्वेरी कर सकते हैं। तो सीक्वल में भी अगर तुम एक्सप्लिसिटली ये फंक्शन को यूज करना चाहोगे तो कैसे यूडीएफ में डिफाइन करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। वो थोड़ा डिफरेंट है, that is little bit different, that I will show you now. Okay, so first I will create one temp view here. So यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोड लिख दिया, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी रिटन द कोड फॉर गेटिंग द temporary view. So if you are not able to understand this, please go and watch my temporary view creation video. Okay, you will get to understand how is it working. Okay, please go and watch these videos also. Because all the videos are in sequence. It will be very much useful for you guys. Okay, coming to this thing. Okay, so it will do now, it will create one temporary view for this data frame. So why we are creating this temporary view, that I have already spoken in my last video, but still I'm telling you. For using the SQL function on this data frame, we need to create one temporary view. So you have to SQL use करके देखते हैं। Select, suppose select ID on and to like this also start on student. If I run this page, I'll get the output only math and English. So for SQL also we can register this function, but it will be some different ways. For using the using the user defined function in SQL also, you can use the UDF for registering the function. So how we can do that? So we can do that like this. So you can see I have already written the function here for saving the time. तो यहाँ पे सीक्वल के लिए कैसे रजिस्टर होता है? तो पाइस्पार्क डॉट यूडीए डॉट रजिस्टर एंड उसके बाद ये आर्गुमेंट में पहले तो अपना फंक्शन का नेम जाएगा जो तुम अपने फंक्शन का नेम देना चाहते हो पाइथन में। उसके बाद जो अपना पाइथन का फंक्शन है, पाइथन फंक्शन का नेम whatever we have given sum of subject. Okay, sum of sub. Okay, उसके बाद बस रिटर्न टाइप को डिफाइन कर दो। ओके, तो ऐसे हम लोग सीक्वल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये हमारा पाइथन में फंक्शन है और ये जो है हम लोग सीक्वल के लिए डिफाइन किया यूडीएफ पे, सीक्वल के लिए रजिस्टर किया। बट और ये वाला है और ऐसे हम लोग पाइप ओनली फॉर पाइथन के लिए रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जस्ट आई हैव रिटन द सीक्वल कोड। इफ यू नो द सीक्वल देन सिंपल कोड यू कैन अंडरस्टैंड। तो टोटल मार्क्स को लिया जो यहाँ पे मैं रजिस्टर कर चुका हूँ, लेने के बाद तो कॉलम रीनेम किया you are getting that. So I think you have understood the concept. It's a very simple concept. If you have still any kind of doubt, please uh, please ask me in the comment section of this video. I will reply on that. Okay, no issues will be there. You can join our WhatsApp channel also. Okay, it's given the link in the description box. Okay, so I have already uploaded multiple PySpark videos. You can go through this. It will be very much useful for the people that who would
learner, a beginner of this by PySpark. Okay, yeah, and also please support my channel. You guys support is very much required for growing our channel. Okay, so thank you for watching our video. Bye.